Assalamu alaikum, dosto, friends. Welcome to another episode of Deccan Bazicha, our channel. We have, in fact, actually started a new thing called Brain Knock, which is going to be theme for all three of us coming in, talking to you guys. Before we go ahead, let me introduce myself, Naveed Sayed, and हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोएब सैयद और अली सैयद. Can you hear me, Shoaib? Represent. Anyways, guys, सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको बताता चलूं कि आज के हमारे एपिसोड का मौजू है, टॉपिक है गैजिंग या स्टेरिंग या घूरना, या हम कहते हैं घुर्रियां मारना. तो बिफोर वी स्टार्ट दैट, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग अबाउट आवर लास्ट वीडियो हमने जो बनाया था उसके बारे में. तो भाई वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था. हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोग नए हैं यूट्यूब के ऊपर और ये सारी चीज़ों के लिए, सो हम लोग कुछ ट्राई करना चाह रहे थे. तो हुआ भी ये था कि बहरहाल जूम की तरफ से हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मिला था. तो खैर हम वी गॉट कैरिड अवे एंड वी स्पोक एंड इंट्रोड्यूस कर रहे थे अपने आप को बहुत सारे टॉपिक्स के. भाई वी वर शोइंग द पोटेंशियल्स एज टू व्हाट वी कैन टॉक एंड ऑल दैट. मैंने फिर वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया वीडियो और बहुत सारे लोगों ने देखा और बहुत सारे लोगों ने सराहा और मैं शुक्रगुजार हूँ उन दोस्तों का और उन भाइयों का. अली, कैन यू पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट व्हाइल आई एम टॉकिंग एंड यू डोंट माइंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है. तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया लोगों ने जो सक्षम से काम लिया, जो लोगों ने टाइम दिया. इवन दो वीडियो लेंथी था लेकिन पूरा 1 घंटा सुना और उसके बाद में उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए, अपने सजेशंस दिए. तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का. बहुत सारे लोग हैं, अल्ताफ़ भाई हैं सिडनी से, फ़ाज़िल सैयद मेलबर्न हैदराबाद से, उन्होंने भी अपना रिव्यू दिया है. हसन भाई हैं मेरे दोस्त मेलबर्न से, उन्होंने भी अच्छा रिव्यू दिया है, ख़ासा लंबा रिव्यू दिया है उन्होंने. बहुत सारी बातें उन्होंने बताई और जिससे हमको हेल्प हो सकता है और होगा भी इंशाल्लाह. क्योंकि देखिए आप, ये है कि जब तक आपको कोई बताएगा नहीं आपको पता नहीं चलेगा. और हम भी वैसे एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे हैं. तो हमारे जो मोस्टली जो रिव्यूज़ थे उसको सारा हमने एनालाइज़ किया. तो सबसे पहला जो रिव्यू था, जो मैं कहूँगा कि 80% ऑफ द लोग ये कह रहे थे कि भाई वीडियो बड़ा था. तो उससे होता ये कि इट कैन एक्ट एज अ पुट ऑफ, लाइक व्हेन समवन वांट्स टू सी द वीडियो and then they see that it's a 55 minutes, regardless of whatever the topic might be, they just want to ignore it and go for something smaller. So that's a very good valid point. और कुछ लोगों ने सजेशन दिया, खासतौर पे हसन भाई ने सजेशन दिया और दूसरों ने भी, कि भाई अगर आपने करना ही है, अगर मौजू आप समझते हैं कि इम्पोर्टेंट है, तो फिर उसको आप किस्तों में करोगे ना, यानी पार्ट्स बना दो, पार्ट 1 पार्ट 2. और एक साहब ने सजेशन दिया कि भाई आपने करना अगर है तो अगर आप लेंथी भी रख रहे हैं तो आप ऐसे करो कि उसको मतलब ये कि आप जो लिंक होता है जहाँ पर आप लिख सकते हो, वहाँ पर लिख के बता दो कि भाई ये टाइम से लेके ये टाइम तक ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं. क्योंकि वो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं सिर्फ वो पर्टिकुलर टॉपिक सुनने के लिए, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं. तो हमने ये सारे सजेशन सुने और हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह. और दूसरा, लोगों ने कहा कि भाई साउंड क्वालिटी, मेरे दोस्त हैं लईक भाई अमेरिका में, उन्होंने सजेशन दिया कि भाई आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो ख़राब है. वैसे अली की साउंड क्वालिटी अच्छी थी लेकिन मेरी और शोएब की साउंड क्वालिटी सही नहीं थी. तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई ठीक है. वो मैं ब्लूटूथ का अपना हेडसेट यूज़ कर रहा था, तो मैंने अपना हेडसेट चेंज कर दिया है और आज मैं मैनुअल हेडसेट यूज़ कर रहा हूँ. शोएब ने भी अपना हेडसेट चेंज किया है. लेट्स सी उसका इम्पैक्ट क्या होता है. लाइक भाई ने और एक बात बताई कि भाई आपका जो जो म्यूजिक पीछे बैकग्राउंड में आपने लगाया, जो हमने लगाया था, we thought it's bit cool, but they said that it contributed a lot towards annoying the hell out of people, especially when you have bad quality of sound and all that. So we'll try to avoid that music part. वैसे बहुत सारे लोगों ने तारीफ किया है. कुछ लोगों ने अली की आंखों की तारीफ किया, कुछ लोगों ने शोएब के बालों की तारीफ किया. जोक्स अपार्ट गाइस, नो डेफिनेटली फाजिल भाई ने अली को बहुत पसंद किया और वो जिस तरह से बीच में आकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते थे एंड ऑल दैट, तो उन्होंने सराहा. शोएब की भी बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया है. और हमारे दोस्त अल्ताफ़ साहब ने तो यूट्यूब के ऊपर भी कमेंट किया. ऐसा नहीं कि सारे लोगों ने ये समझा कि ये बहुत बड़ा है और बेजार हो गए. उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया, उन्होंने सारा वीडियो देखा और सारा वीडियो एंजॉय किया.
So definitely you would find a target market wherein people would like to hear you, regardless of how much time that you would like to spend. So guys, before that was the review part, and I just wanted to further सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था जिन्होंने टाइम दिया और हमें सराहा और हमें अप्रिशिएट किया, और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आज का जो मौजू हमने सोचा है, देखिए, और मौजू में जाने से पहले बता दूं कि हमारे जो एपिसोड्स हैं, ये हमारा दूसरा एपिसोड है। लेकिन अब हमने इसका नाम रखा है ब्रेन नॉक। इन द सेंस ये कि भाई एक दिमागी कुचका, यानी कि आप बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स आपके अतराफ होते हैं, लेकिन आपको वो एक मखसूस जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता एंड ऑल दैट। सो वी वुड बी डिस्कसिंग सर्टेन टॉपिक जो कि आपको सोचने पर आमादा कर देंगे। तो कोई यूनिक कॉन्सेप्ट्स तो है नहीं, लेकिन यही हैं जो भी हैं, लेकिन हम उस बारे में गुफ्तगू करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे, और हम अपना टाइम लिमिट कर देंगे इस बार, और उतना लंबा नहीं करेंगे जितना लंबा हमने किया था लास्ट टाइम। तो आई विल बी वाचिंग टाइम गाइस फॉर यू गाइस, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग कमेंट्स करेंगे या यूट्यूब के ऊपर, और हम लिंक भी देंगे बहुत जल्द हमारे ईमेल का, अगर किसी को ईमेल करना है तो वो भी हम तक रुजू हो सकते हैं। तो ये है कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गेजिंग या स्टेरिंग। तो इन द सेंस ये जो लोग घूरते हैं तो उसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। बिफोर वी गेट डीप इनटू द टॉपिक, आई जस्ट वांटेड टू गो ओवर विथ यू सम ऑफ द थिंग्स दैट ऐसे में हमारा मकसद ये होता है यहाँ पर कि वी डोंट वांट टू गेट लॉट ऑफ एम्पिरिकल डाटास और दिस एंड दैट, बट हमारे दिमाग में जो होता है बस हम वही बात करते हैं। वी जस्ट वांटेड टू बी नेचुरल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने ऐसे देख लिया ताकि कुछ मसाला मिल जाए। तो देखते हैं कि हजरत गूगल क्या कहते हैं। तो combination of Wikipedia and all that. It says, okay, so what we have is the first question is whether is it socially acceptable to stare at people. You can see that, like, just staring at random people, घुरियां मार रहे हैं, कोई बस खड़ा हुआ है कुछ करते हुए, नाक खुजा रहा है अपनी and all that, and आप खड़े रह के घूर रहे हैं उनको, या कोई जा रहा है या कोई खूबसूरत सी लेडी जा रही है और आप उसे खड़े घूर रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? Now let's see what Wiki has to say about it. Staring can be interpreted as being hostile, uh, like being disapproval of another's behavior, or simply affection. Um, Definitely, I mean, people might probably see it as like, why is this individual looking at me? Do I look weird? Do I look, that? So it's just that the creepy look people give it. Just for an example, if you were to, अगर आप देखेंगे कि अगर अब ये खुद अपने ऊपर टेस्ट कर लें आप, कि अगर आप कोई बंदा अगर जा रहा हो सड़क पर, आप उसके चेन की तरफ देखेंगे, यानी कि जो जिपर एरिया होता है वहां पर आप देखेंगे, यानी कि थोड़ा घूरेंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वो आगे जाके चेक कर लेगा कि क्या हो गया भाई, क्यों देख रहा था, कि मेरा जिपर खुला तो नहीं है। तो दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट यू गाइस कैन से, सो बट अगेन दैट मेक्स पीपल could make them uncomfortable and be self-conscious about how they look and all that. Another thing is that it's a form of aggression, like invasion of individuals' privacy. Definitely, man. I mean, मैं बैठा हूँ आराम से अपने गार्डन में किसी पेड़ के नीचे, जैसे शोएब बैठा हुआ है, enjoy कर रहा हूँ, तो और at the same time there is this weird guy walks along and then giving you creepy look. Definitely you're invading my privacy, man. You just basically destroyed my mood. What do you want to see? What are you looking at, you creepy fellow? Anyway, so yes, it can be considered as a bit hostile, bit aggressive, a bit rude at a point. And again, this is also like a flirting technique. Sometimes people want to look at someone just to show them that they are interested in you and all that. But again, that's one way, and it all depends on how सामने वाला कैसे ले रहा है आपकी बात को और आपकी हरकत को, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भाई ना कि just because you think you're someone good looking, whatever, and you keep on looking at everyone. No, not everyone is going to appreciate that. Some people might. That exception would probably, take that signal as a good omen, and things might probably get a bit better. But no. Another, I don't have long, but just want to go ahead. Another good aspect is children have to be socialized into learning acceptable learning behavior. Like kids, बहुत सारे हद तक उनको पता नहीं होता कि etiquettes क्या होते हैं, manners and all that. ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि भाई इनको समझाओ कि भाई कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो उसमें ये भी हम बता सकते हैं कि भाई देखो बेटा,
आप किसी को फिंगर उठाकर बताकर बात मत करो उन बारे में, ताकि वो उनको लगे कि आप उनके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर आप जो है ना उनकी तरफ घूरना नहीं, एंड ऑल दैट। तो ये बच्चों को हम शुरू से बताना पड़ता है, वरना बच्चों को पता नहीं होता, अनलेस दे लर्न इट बाय द हार्ड वे। चाटा वाटा पड़ जाए तो फिर पता ही चल जाता है कि भाई ये चीज सही नहीं है, लेकिन it's a good habit, part of the manners to educate kids. Okay, what would you do if someone stares at you? On the other hand, now see, the thing is, on the other hand, you see, staring definitely doesn't have to imply intimidation, as someone can be either subconsciously looking at something. मतलब ये कि हम किसी कोई बात सोच रहे हैं और हम देख रहे हैं भाई, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन हमारी नजरें किसी और जगह पर टिकी हुई हैं, तो ये हो जाता है वैसे। या नहीं, हमारा इंटेंशन वैसे नहीं है, हम कोई अच्छी सीनरी देख रहे हैं और कोई सामने सामने आ टपक पड़ता है, तो भी वो माइट एज वेल, तो वो एक अलग बात है। तो हर सूरत हाल में और वो सिचुएशन के हिसाब से समझ सकते हैं। तो एट ऑल कॉस्ट आई थिंक इट शुड बी अवॉइडेड, टू डायरेक्टली stare at people. It's a bad habit. Cultures play a big role in it as well. Like in some cultures, they think that it's okay to be staring at, because that's part of the culture. But in other cultures, they seriously don't like it. In last बात में ये मौजू पे मैं कह रहा हूँ, जो just to get you guys started, कि भाई हमारे यहाँ इस्लाम में भी ये चीज़ को बहुत ही मायूब माना गया है, और कुरान में क्लियर अल्फाज में हमको कहा गया है कि लोअर योर गेज, अपनी नज़र को नीचे रखो। आप मार्केट में जाते हैं, कहीं किसी को देखते हैं ऑल दैट, तो आप अपनी नज़रों को नीचे रखना चाहिए। दैट्स द राइट थिंग टू डू। Okay, guys. So what's your take on this topic? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? Ali, do you want to go first? Can you guys hear me? I can hear you. I can see Hello. you. Yes. Positive. तो इसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि आई रिमेम्बर इनिशियली मैं जब ऑस्ट्रेलिया को आया था 2012-2013 के टाइम पे, और मेरे जो भी क्लासमेट्स थे, दे वर ऑल व्हाइट्स। तो जब मेरे से बात कर रहे थे, एंड देन देयर वाज दिस न्यूज़ जो ना सुन रहे थे अबाउट दिस गाय हु वाज हैविंग अ कोर्ट केस, मैजिस्ट्रेट कोर्ट में उसका केस चल रहा था, apparently for stalking and staring at this woman for far too long. Or they used to like laugh at me, this and that. Was not bullying, but all fun. उसके माहौल में उन्हें रखते थे। So basically, मैं जब ये अब डिस्कस करने वाले हैं बोल के मालूम हुआ, तो I just went out there to have a look, और वो आर्टिकल मेरे को मिला, and apparently it's true. 2012 से 2013 के बीच में यहाँ पे एक कोर्ट केस हुआ of this woman who filed a case against an Indian man. लेकिन वो केस खत्म होने का रीजन जो दिया है was apparently Bollywood. So the line of defense that this person used was कि this guy was romanticizing this woman based upon जो Bollywood romance है उन्हें movies में देखा. And then he had to back it up. अच्छा. He had to back it up with evidence. So he basically probably showed like, yeah, real case. So he actually showed all of this to the magistrate. I actually have that article available. मगर वो news source जो है नहीं, वो अब उसकी authenticity के ऊपर थोड़ा सा question है, मगर news overall सही है. So yeah, this guy actually did that, और case dismissed. Bollywood dismissed. Bollywood. Yeah. हमारे यहाँ तो होता है ना, Bollywood के अंदर acceptable है, लड़का लड़की को छेड़े जा रहा है, मुरुस्त रही है. Not just that. So his idea of basically conveying his message and affection towards this woman was to just stare at her. आँखा फाड़ो देखो. It made her feel very uncomfortable. Of course, उसके वजह से उन्हें कोर्ट में केस करी. But yeah, man. Free pass. Bollywood has helped us a lot. Bollywood, yes. Crazy, man. Bollywood has come to his rescue. Shoaib, any thoughts on it that you want to shed light on? Of course, man. So, I think I'm a man. हमारे पास ना like लड़का and लड़की बात करना, like if they are strangers, it's very weird माना जाता है, and it's not very common. तो and हमारे school system में भी I don't think like romance से related या फिर like sex education से related ज़्यादा focus नहीं होता है studies पे. Definitely. So the next best thing हमारे नौजवान look for, like all the education is coming from Bollywood, right? And then Bollywood is teaching you हसीना मान जाएगी, right? तो घूरते रहो.
घूरते रहो घूरते रहो, नको मत देखो बोलने पे भी घूरते रहो, and then at a yes point हसीना मान जाएगी. I Like s- all the songs and everything, they all like इसी पे focus होता है कि लड़की ना सही है बोल रही है लेकिन लड़का पीछे लगा होता है, and then कहीं ना कहीं right बात बन जाती है. बॉलीवुड इज द रियल कल्प्रिट देखो यार देखो जैसे मैं पहले कह रहा था कि कल्चर प्लेज अ बिग रोल आई गिव यू एन एग्जांपल अनफॉर्चुनेट इट्स अ रियल एग्जांपल रियल लाइफ आई नो समवन मेरे एक दोस्त है तो वो बिल्कुल थोड़े से मॉडरेट नेचर के थे तो दे वेंट बैक बैक होम दे सेड के वहां पर तो बाइक पे सफर करते ना तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि भाई चलो कहीं जाना था तो उनको बीवी को उन्होंने खुले दिमाग के थे तो उन्होंने बीवी को उन्होंने कहा कि भाई ये काम करो कि मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि अगर तुमने बुर्का पहनना है या नहीं पहनना है इट्स अप टू यू तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो ठीक है बुर्के की क्या जरूरत है बाइक पे तो जा रहे हैं वैसे संभालना बड़ा मुश्किल है तो उन्होंने प्रॉपर ऐसे ही मतलब ये जो हिजाब हिजाब होता है उसके ऊपर वो पीछे बैठ गया देन दे कंटिन्यूड और जब वो पहुंचे हैं मार्केट में मेन मार्केट में तो वहां पर जो लोग घुर्रियां मार रहे थे इनको she said कि she felt as if you know she is some celebrity or something but again she was so uncomfortable like people were just gazing looking like as if there is no tomorrow so she felt so embarrassed the whole journey वो जो गए थे जो भी है शॉपिंग वॉपिंग पता नहीं वो सारा टाइम उनका जो है ना बड़ा हॉरिबल रहा तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं नहीं भाई यहाँ पर तो भाई बुर्का जरूरी है whereas in western world आपको कोई घूरता नहीं कोई देखता नहीं आपको you know there people don't just if they, even if they were to look at you they will just look and then they'll just pass they won't like keep on staring at you because they know that it's rude हमारे यहाँ है कि भाई इस्लाम में कहते हैं कि आपको अगर किसी लड़की की तरफ नजर पड़ जाए तो फिर सेकंड लुक नहीं देना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ तो बस खोल के बैठे हुए अपनी आंखों को बस घूरे हुए लेकिन हाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में ऐसे है कि वो ये चीज को रेस्पेक्ट ज्यादा करते हैं तो that's funny but they learned it through hard ways any other एक और एक examples please इसके ऊपर एग्जांपल है लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस एस्पेक्ट एक बहुत चैलेंजिंग चीज भी है ये लाइक अगर हैदराबाद में स्पेसिफिकली अगर आप कोई मैन टू मैन किसी को घूर रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू चैलेंजिंग देम oh राइट yeah of टू course लाइक अ okay कॉम्बैट यही क्या देख रहा क्या दिख रहा है हाँ हाँ किधर लड़ना है क्या I was like, हाँ बाबा बहुत गौर कर रहा हूँ बहुत देख रहे हैं तुम मेरे तरफ हमेशा आ रहा हूँ जा रहा हूँ चेक कर रहा हूँ मैं तुम्हारे yeah definitely वो एक चीज है अगर आप किसी को भी चैलेंज I think करना it's a sign of dominance, man. as well yeah I mean हाँ different ways you can you know look at people घूर के देख रहे हैं आप या स्माइल करके देख if रहे I'm an हैं alpha I'm looking at everyone okay all right sure पीठ पीछे कर लेके chest out yeah bring it on definitely I think it's a problem, man. It's also transitioning in like Western countries. हमारे जब Indians जा रहे हैं, right like go it's not very common here, right? तो जब like I have friends here in Australia, तो यहाँ पे and then they tell me very often कि it's a common trait that Indians would look at them a few times. oh okay that's racist now Yeah, yeah okay that's yeah not, ना but ये होता है that's ऐसे facts, right? definitely yeah, it could be I mean see it's stereotyping is not the thing but again yes ऐसे हो जाता है कि लोग बोलते हैं खैर देखिए गाइस अभी ये है कि आपको प्रॉपर ऑफिसेस के अंदर भी कंपनीज में भी वर्क एरियाज में भी एक एरिया है जहां पर कहते हैं कि जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके अंदर घूरना भी आता है भाई आप कहेंगे सेक्सुअल हरासमेंट इज जस्ट नॉट गोइंग एंड टचिंग समवन यू नो किसी को कॉन्स्टेंटली घुर्रियां मारना भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है एट वर्क प्लेस आई मस्ट एडमिट तो बहुत सारे लोग हैं इनको ये पता नहीं होता कि घुरने में क्या है घुर लो लेकिन इसके ऊपर भी आपको आपकी नौकरी जा सकती है और कुछ बातें हैं जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर हमारे कितने हो गए 44 यानी कि हमारे 20 मिनट तो हो ही गए ठीक है so यार ऐसे overall नहीं लगता जैसे कि हम बात कर रहे हैं ना हम थोड़ा 5 मिनट और बात कर लेते हैं ना अभी ऐसे लगता है कि टॉपिक शुरू हुई और खत्म हो गई जी जी अली क्या overall it's not just के अपन ना सिर्फ लोगों को घूरते हैं ये एक माइनॉरिटी है मेरे हिसाब से लाइक फॉर एग्जांपल इंडियंस जो दिख के आते हैं इज बेसिकली बिकॉज दे आर कमिंग टू अ न्यू प्लेस हैवंट सीन थिंग्स जो यू नो ना मे बी ड्रीम करे होंगे अपनी लाइफ में देखने के ऐसे बट ओवरऑल अगर आप देखें वी आर वेरी रेस्पेक्टेबल दूसरों की तरफ और वर्क प्लेस में भी वी आर वेरी हार्ड वर्किंग वी डोंट डू ऑल ऑफ दैट मगर इट्स जस्ट दैट
एक स्मॉल माइनॉरिटी जो लोग हैं, आई डोंट थिंक is because उल्ला rude है या फिर they 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 actually trying to be disrespectful towards someone. It's just कि उल्ला ये exposure नहीं है उन लोगों की तरफ, उन लोगों को to know how to behave basically. राइट, राइट। हाँ, सही है। आई मीन डेफिनेटली अब जो लोग आते हैं इंडिया से बहुत सारे हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड हमारे यहाँ जो हमारी संस्कृति है कि भाई वी रिस्पेक्ट एवरीवन, एल्डरली लोगों को इज्जत देना, लोगों की हेल्प करना। अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं खाने के लिए तो भी वी ऑफर टू पे देयर बिल्स एंड स्टफ। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये कल्चरल चीज़ें हैं थोड़ी सी जिसके ऊपर हम रोशनी डाल सकते हैं और ब्रेन नॉकिंग कर सकते हैं इस बारे But में। it is a problem, man, like eye teasing, because it's not like a minority of people. It's actually very like problem, बहुत बड़ा problem है इंडिया में, It's खासतौर like से a like Indian prominent women पे. thing. Like if you ask, like 9 out of 10 women have been like had a case of like eye teasing. Like eye teasing is a term, could be defined as like कि आपको ना like इशारों से they are like teasing you, and then this could be identified as a form of sexual harassment, right? आंखों से नंगा And कर this is डालो a किसी common को। thing. This is not a minority of people doing it. And then a lot of people come to other countries like Australia, or obviously you bring that values with you, and then you have like, तो यहाँ पे भी reputation खराब होता है as a culture, right? एज अ कल्चर, यस, उंगली Yeah. उठती है। सही है, सही है, सही है। और So I think the best solution would be like women speaking up, right? If they have like a case of people, they just walk past. That's what happens. कि like किसी को आप घूर रहे हो, they will just ignore you. They walk past. ऑटो वाले देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, right, निकल गए आगे से. that's the thing that I wanted to bring, and then I'm glad that you started. अभी ये कि भाई देखो टाइम तो काफी हो रहा है, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि भाई इसका रेस्पॉन्स कैसे होना चाहिए, किस तरह से। अगर आप ऐसी सूरत हाल में आ जाते हैं कि जब वहाँ पर आपको कोई घुर्री मार रहा है और आप अनकंफर्टेबल है, तो क्या करना चाहिए? What do you think, Ali? It depends. मेरे हिसाब से speaking up is important, but at the same time it can't be like if it's a one-off thing. I think it's ideal कि आप वो situation से अगर निकल जा सकते तो easily निकल दो, rather than speaking up right then and there, because you can't be fixing everyone at the same time. मगर अगर वो एक constant चीज है and then it's impacting your daily routine, then I think definitely speaking up is important. राइट, आई मीन सही है। आई थिंक वी हैव टू ऑलवेज मेंटेन अ बैलेंस कि भाई क्या है कि देख रहे हैं कि भाई आप एक गली में खड़े हैं, आपका नेबर है, और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं आपका निकलना बाहर मुहाल हो गया है। जब आप बाहर जा रहे हैं, घुर्री मारे जा रहे हैं, देख रहे हैं सारा का सारा खानदान आपको चेक कर रहा है, तो भाई आई थिंक देयर इज अ पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट इग्नोरिंग इट। आई थिंक यू हैव टू गो एंड देन रूबरू होकर बात करनी चाहिए और समझानी चाहिए कि भाई देखो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, ऑल दैट। अगेन ऑन द अदर हैंड, ओके शोएब, ये बताओ कि भाई अगर आपने कन्फ्रंट करना ही है तो फिर आप का क्या अप्रोच होना चाहिए? भाई आप किस तरह से जाएंगे, समझाएंगे? भाई एक तो तरीका ये कि हल्ला बोल दो, दूसरा ये कि भाई आप पोलाइटली बोल, क्या अप्रोच आप निभाएंगे? Like ना हल्ला बोलना is not the appropriate response. Obviously like situation की intensity के हिसाब से आप respond कर सकते हैं, but the first approach should be peaceful. And I've seen this before, right? कि हमारे घर के बाजू ही 2-3 गाड़ियां लेके बच्चे आके ठहर जाते थे सुबह सुबह के टाइम पे, लाइक कॉलेज को जा रहे हैं के टाइम पे बच्चे घर के बाजू ही है, उसमें मैं गुरबाग की बात कर रहा हूँ. एंड देन दिस इज व्हाट हैपेंड वंस, राइट? कि एक बार आके वो बंदी बाहर निकल के बोली क्या देख रहे, किसको देख रहे? एंड देन दे हैड नथिंग टू टॉक बैक टू, उन गाड़ियां स्टार्ट करके निकल गए. And then I never saw them again. Like speaking up kind of scares them. They won't come back. But I've seen this case, right? So I think this could be a solution. Like even don't just walk past. They'll come back again if you're submitting. जी, That's देखिए what I think. एक बात बताऊं मैं कि it's just like okay, this is not the right example to give, but again just to give an example of the scenario, what happens when you are when you see a dog that जो आपके पास आ रहा है, so do you think you should run or you should turn around and look at it and then stop or confront? Which approach will you choose?
I'll show no signs of emotions. I'll just try to behave as normal as possible. इंडिया में तो लेकिन कुत्ते डरे हुए मेरा रहते हैं सवाल आपसे, ये है मगर अली, यहाँ पे मेरा सवाल ये है, मैं ये जो कह रहा था आपसे कि भाई अगर रास्ते पे जा रहे हैं और अब डॉग, you know, a ferocious dog, unattended dog comes up to you, what do? Will you run away or will you turn back and face it? What would be the most viable option? face it. Face it, obviously, because if you run, then it's going to chase you. But if you turn around and confront it, you know, most of the time it डर जाता है वो, and then it will go on its way. So that's like a good example. But again, you know, we can't get down to people's level all the time. We have to always maintain a balance, see the situation, look out. Maybe the best possible option would be that if you see that has become a trend, बार बार अगर ऐसे हो रहा है, तो I think it's about time you politely go and approach and say that, listen, I don't know what culture you come from, I don't know if it's acceptable in your culture or not, but हमारे culture के अंदर इस तरह से घूरना, किसी को intimidate करना थोड़ा सा rude माना जाता है. तो मैं you know, I'm not here to fight with you or anything. You can put some smile करते हुए बात कर सकते हो, but थोड़ा सा serious भी. I would suggest that next time, you know, please don't do that, because it's making me like really feel uncomfortable. There are chances that if you keep on doing it, that I can take it to a further level, maybe complain or something. But this is like a very good indication to you that I'm really feeling uncomfortable, because a lot of the times होता है ना कि जब आप कुछ कर नहीं सकते उसका, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, because you know you're not able to, you're going through something, harassment, but you're not able to do anything about it. So that basically is a very big cause of stress and depression. Like, I also think like parents and teachers play a major role, educating their kids of like this, like, because this is a widespread problem in India. So as long as we acknowledge this is a problem, I think address karna bhi important hai. Like when the kids are growing up, that they don't do it, because Bollywood to 100% वही track पे लेके आ रहा है आपको. Every song that they make is Yes, like harassment. I really appreciate your input on that. But okay, we're getting close to the 30 minutes mark now. So I would like you to conclude, and then maybe we can disperse off. Maybe we can do another episode. I think this time is enough for this topic. But again, अगर कोई कहता है कि इस बारे में और बात करो, तो definitely we will have another episode. But for this topic, I think this much is enough. Would you like to? What I can conclude from my side is कि obviously staring का problem है, खास तौर से अपने culture में, and then I think ये problem को बहुत सारे लोग acknowledge नहीं करते हैं, and then it's कि ignore करना बेहतर option माना जाता है. Even like families के बीच में they will prefer like the not having कोई family के नाम पे कोई धब्बा नहीं बैठना, तो लड़ाई झगड़े से दूर हटते हैं. They will always look for peace even though they're getting harassed. I think my personal conclusion would be always speak out, always educate yourself, और अपने आसपास के लोगों को भी educate करो कि this is not right. Imagine your sisters and your mom being that place. So yeah, it is a problem, man, and it is spreading to other countries now. And then अपना reputation खराब हो रहा है उसकी वजह से. We are more than just some creepy guys just standing and staring. Right? Creepy guy. All right, guys, thank you very much for your time. I think we had fun. This is an important topic. ये बड़ा important मौजू है. अगर आप इसके बारे में सोचो, और हम भी इस बारे में सोचते हैं, और we'll do whatever we can to, अब हम लोगों ने अपना जो जनरल ओपिनियन है वो रख दिया है इस बारे में. और आप लोग अगर सहमत हो इससे, जो भी लोग देख रहे हैं, तो इसके ऊपर यूट्यूब पर कमेंट करें या हमें पर्सनल ईमेल करें. विल बी मोर देन हैप्पी टू लिसन टू यू. और अगर कोई टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करना, आप सुनना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें, और वी विल डेफिनेटली एंडेवर टू लुक इनटू दैट एंड देन डिस्कस मोर. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सुनने का, और आप लोगों के सपोर्ट का, और आप लोगों के टाइम का. Shall we do it, guys? 1, 2, 3. Lower your gaze. Lower your gaze. Lower your gaze. All right, guys. Thank you very much. Shukriya. Assalamu alaikum. Bye. Peace out.